Okay. So Yes. one of the findings one of the physiologies apart from temporal arteritis and inflammation is acute blockage of the vessel from an embolus. That embolus can come from a thrombus, can be superimposed on a thrombus, or it can come from a thrombus. That thrombus can be inside the internal carotid artery, the common carotid artery, or it can even be dislodged from the heart itself, from the atria or the ventricles. In CRA, there must be a cause of the acute occlusion. So your diagnosis for this case is CRAO, central retinal artery occlusion. Okay. What is your treatment? How will you manage this patient? Dissolve करना somehow उसको. Yes, somehow we have to dissolve that. What are the ways modalities in which we can use? The general principle is correct that we have to get rid of the embolus, which is causing this, or if there's an inflammation, we have to get rid of the inflammation. Okay. Let's start with if there's an embolus, right? We get rid of the embolus. How do you think we can do that? Ocular massage. Ocular massage. An ocular massage will remove the embolus. It will either collapse the embolus, टूट जाएगा, या vessels के अंदर किसी तरह से बस तंग होके निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा, right? So one thing we can do is an ocular massage. What else can we do? Heparin use कर सकते हैं. Heparin or fibrinolysis would be the term, right? Fibrinolysis, चलो heparin हम लिख सकते हैं, अभी confuse नहीं करते. Heparin or anticoagulants, just so that whatever the thing is, if it's an embolus, it does not lead to a permanent एक तरह से formation बन जाए और उसकी expansion ना हो. तो heparin, जब हम बात कहते हैं heparin की, heparin is an anticoagulant. Anticoagulant का मतलब है it prevents clotting, right? Similarly with aspirin, it prevents plaque formation. However, once the plaque is formed or once the clot is formed, do you think that heparin and anticoagulants, they can have an effect? No. No. So the specific class of drugs which you will use, if you have to use, are those drugs which will break up that embolus, break up that clot. Streptokinase वगैरह. Streptokinase and such. These are termed under fibrinolytics. Fibrinogen is one of the important components of a clot, of an embolus, of a unique clot, like a blood clot. We have blood embolus, whatever the cause. Yes, fibrinolysis can be tried. It can be tried. What else do you think we can do? Nitrates. लेजर से लेजर से हम क्या करेंगे? एम्बोलस को ब्रेक करेंगे. Embolus को break कर सकते हैं. Yes, we can use lasers to break the embolus. Directly focus on the embolus if we can see. In this case, can we see the embolus? No. That the reason for this is because in central retinal artery occlusion, the most common site is at the lamina cribrosa, just behind this or this area. The lamina cribrosa, the सबसे forward end, this is what we're seeing in the front of this picture. You know that lamina cribrosa is the opening in the sclera through which the ophthalmic artery, branches of the ophthalmic artery, and the optic nerve, the branches of the optic nerve, they pass. So it's very tight or a constricted sort of area in which the vessels are already small in caliber. So if there's an occlusion there, we will not see any signs of occlusion over here. We can use the laser to break up a clot or a plaque if it is visible to us. And hence its application is more in branch retinal artery occlusion, in which the plaques or the emboli, if there's a cholesterol embolus or if there any other embolus, if we can see that embolus in the vessel, yes, we can use a laser to break it up. और हम क्या कर सकते हैं? Nitrates, vasodilators. They dilate the vessels so that
embolus, it can pass through the embolus, or the plaque which is causing the acute occlusion, it can pass through. Yes, that is the concept. Something we use is amyl nitrate. Amyl nitrate inhaled is used uh, on the basis, on the same principle, on the same basis. What else can we do? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करेंगे. क्यों कम करेंगे? आईओपी कम करने से हमें क्या फायदा होगा? परफ्यूजन अच्छी होगी. परफ्यूजन क्यों अच्छी होगी? प्रेशर कम पड़ेगा आर्टरी पे. आर्टरी प्रेशर कम करने से क्या होगा? क्या होगा? परफ्यूजन अच्छी. एक बंदा बोले, जिशु में बोल रहा था, आप बता रही थी कुछ कि प्रेशर कम करने से क्या होगा? तो बेसिकली प्रेशर कम करने से क्या होगा कि इमेजिन घरों में घास को पानी देने के लिए हम पाइप यूज नहीं करते, तो द आर्टरीज दे आर मोर और लेस लाइक दैट पाइप. इफ यू पुश द पाइप और कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने हाथों से दबाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट द ल्यूमेन ऑफ द पाइप इट कोलैप्सेस, राइट? ल्यूमेन कोलैप्स करेगा तो पाइप के दोनों पार्ट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. जिनको नहीं कर पा रहा फॉर सम रीजन, यस, दो पार्ट्स करीब आ जाएंगे. If there's an external pressure, this is what IOP does. IOP is an external pressure on the retinal vessels so that they do not overly dilate. जब आप IOP remove करते हैं, if you remove this IOP, what happens is that the vessel walls they will dilate. क्योंकि बाहर जो एक force थी, एक pressure था which was keeping them collapsed or was keeping them close together, that pressure is somewhat relieved. उसकी वजह से the vessels they will open up. अब CRAO में हम open up कहते हैं because we need to move that plaque or we need to move that embolus along. क्योंकि अंदर जो plaque फंसा होगा, if the vessel it is widened, that plaque moves along and the occlusion is relieved. However, in the normal eye, there is decrease in IOP, especially rapid decrease in IOP. What do you think will happen? इससे तो वीनस ड्रेनेज सही ज्यादा बोला. होनी चाहिए. क्या बोले आपने? सही बोला आपने. क्या बोला? आपकी आवाज कट गई थी, रिपीट कर देना. वीनस ड्रेनेज, क्योंकि जब आईओपी ज्यादा होता है तो वीनस जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा होता है तो वीनस रिटर्न इम्पीड हो रहा होता है. तो जब आईओपी कम होगा तो उससे तो वीनस रिटर्न ज्यादा होना चाहिए. वीनस रिटर्न आईओपी से ज्यादा होगा, कम होगा? अच्छा, ये वीनस रिटर्न आप कैनाल ऑफ श्लेम की बात कर रही हैं या ऑप्टिक नर्व की बात कर रही हैं? ऑप्टिक हेड की, ऑप्टिक डिस्क की, जहां से वीनस रिटर्न हो रहा है? नहीं, मैंने एक बात पढ़ी थी, नेगेटिव वीनस रेगुलेशन कोई चीज होती है, तो उससे रिलेटेड था, ये लिखा हुआ था. आप थोड़ा सा डिफरेंट तरफ जा रही हैं. वो आईओपी ग्लाकोमा की साइड पे थोड़ा सा चला जाता है. वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्लाकोमा डिस्कस करेंगे. अभी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि there are retinal veins and retinal arteries. If that IOP maintains somewhat pressure on those vessels, if that pressure is suddenly relieved, meaning that there is sudden decrease in IOP, what will happen to the retinal vessels in the normal eye? हम अभी कह रहे हैं ना IOP dilate, तो rapidly dilate करने से क्या होगा? परफ्यूजन जो अच्छी प्लेग होगी. है वो मूव कर जाए. क्या हो जाएगा? प्लेग dislodge हो जाएगा. Plaque dislodge होगा. Yes, that will occur in an eye which has an occlusion. In the normal eye, में, if there is a sudden decrease in IOP, what will happen? In a normal eye? Normal eye में, in retinal vessels को क्या होगा? engorged कर जाएंगी वो. Engorge कर जाएंगी, बिल्कुल. Rapid decrease in IOP, they will engorge. Engorgement के बाद क्या होगा?
Hyperemia? Hyperemia हो सकेगा. Hyperemia is an active process. It congested है, congested, engorged. मतलब एक लिमिट होगी ना वेसल्स की भी कि they can be engorged to a limit. Okay. If that limit is reached, what will happen then? What will happen next? Burst. Aneurysm. Hemorrhage is it? Hemorrhage हो जाएगा. अच्छा, Hemorrhage? aneurysm is not a sudden process. उसमें time लगता है. So what will happen is there will be a rupture of these retinal vessels and there will be a massive hemorrhage. Okay, so you always have to be careful when you're decreasing the IOP, especially when the IOP is not increased. Glaucoma में तो IOP कम करने की हम reason समझ आती है, right? But if there is a sudden decrease in IOP, the vessels can be congested, and if that sudden decrease is very great, there can be a massive vitreous hemorrhage. कोई ऐसी condition आपके ज़हन में आती है in which there can be a rapid decrease or fall in the IOP? Cataract surgery. Cataract surgery, any ocular surgery in which there is a chance of leakage of the vitreous humor. That can lead to a rapid fall in IOP and massive vitreous hemorrhage. So this was something else, a concept clearing of sort, which I thought was necessary. So these are some of the treatment modalities we will use. We can do an ocular massage. We can use fibrinolytic therapy to dissolve the clot. We can use laser to destroy the clot, especially if the clot is visible. We can administer nitrates and vasodilators to dilate the vessels. We can decrease the IOP to IOP. We can decrease IOP controlled decrease so that some of the pressure on the walls is relieved. The vessels, they are free to move. They are relaxed. They can be dilated easily. These are some of the treatment modalities, and we use all of these treatment modalities in the acute setting because CRO is an ocular emergency. Okay? It's an ophthalmologic emergency. This one, medical emergency and a heart attack, stroke, etc. CRO is an ocular emergency because if it is not treated, what will happen? क्या हो सकता है? Ischemia. Yes, ischemia. Yeah. Sequelae के spelling मुझे नहीं आते. ठीक है, sequelae or complications. Yes, there can be massive ischemia. Ischemia of the retina means that the retina will die. If the retina is dead, the eye is dead, the light perception will be zero. Okay, that is one thing. That is if there is complete occlusion of the central retinal artery. Complete occlusion, no blood is going through, light perception will fall to zero, the retina will die. However, if there is some mild blood flow through the eye, ठीक है, थोड़ा बहुत खून निकल रहा है, it's not a complete occlusion. It's an incomplete or partial occlusion of the central retinal artery. फिर क्या होगा? Visual field effect. Visual field effect हो सकता है, बिल्कुल. But specifically regarding the ischemia के बारे में सोचें. If some blood supply is still going through, yet it is not enough to meet the metabolic demands of the retina. Neovascularization. Neovascularization, exactly. Neovascularization क्या होती है? If the retina is ischemic, if it is not replacing and getting its fair share of blood supply of nutrients, it will release factors, specifically vascular endothelial growth factors, which will cause a neovascularization or an increase in the formation of blood vessels. So how will we counter this neovascularization? Anti-VEGF. Yeah. Anti-VEGF. Anti-VEGF is used as an adjunct to Pan-retinal. Pan-retinal photocoagulation. pan-retinal photocoagulation with anti-VEGF. Okay. So this is more or less the treatment that we will do in central retinal artery. Okay. Again, scenario को एक बार briefly discuss कर लेते हैं. A patient will come with you who will have the relevant age and the relevant predisposing factor, and he will have unilateral vision loss, which will differentiate from the other disease that predisposing factor can cause, meaning that hypertension can cause hypertensive retinopathy. It can also cause central retinal artery occlusion.
How will you know the difference? Based on the history and based on the symptom of unilateral vision loss. And how sudden is that vision loss? In the statement, you will be given that the retina is pale, there's a cherry red spot, vessels are attenuated and constricted all around the retina. Okay, this is not necessary in the symptom, but you will be given this. You will be told this in the question stem in the MCQ. And your diagnosis will be central retinal artery. Same symptoms are somewhat present. Like, for example, if we discuss this slide, okay, we can see that the rest of the retina is more or less normal. The vessels are normal. However, the inferior and temporal, because this is the temporal side, inferotemporal part of the retina around the macula is hyperperfused. The vessels are attenuated. Vessels are attenuated. The retina is pale, milky white. And this is not a generalized finding, it's a finding around the inferior part. So this is a branch retinal artery occlusion. And if the same symptoms, the same scenario, the same vignette is given, that is a 50-year-old hypertensive who presents to you with some visual field effects on a straighten up examination on fundoscopy, you find that the retina is pale in the inferior temporal quadrant, it's milky white, and the vessels are constricted and attenuated. Your diagnosis will be branch retinal artery occlusion. This was more or less all about CRAO and BRAO. The predisposing factors, the investigations you have to do, the management, and what important complications can arise. Moving on to our next case. What are the important symptoms in this case? Age. Age. Age is very important. Diabetes. Diabetic, a predisposing factor. What else? Unilateral vision. Unilateral vision loss. Unilateral loss. Okay, unilateral And loss of past. vision over the past day. तो हमें दो तीन बातें पता लग रही हैं. हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी डायबिटिक रेटिनोपैथी और हमने देखा था हाउ डायबिटिक रेटिनोपैथी occurs over years. It's a gradual process. It's an insidious process, right? So if a diabetic patient presents to us with a one-day history of unilateral vision loss, meaning that चलो एक तो काम है ना जो सालों से चलता आ रहा है. If it's insidious, the patient does not feel that it's sudden. Lekin if that process is going on along as well, and the patient has a sudden vision loss, or his excuse me, and if he feels that there is a sudden vision loss, and that in one eye, this means that this is not diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy does not occur over one day, and it does not happen. It does not cause unilateral vision loss. It causes bilateral vision loss. So, how will you work up this patient? Visual acuity. क्या वर्कअप करेंगे इस पेशेंट का? पहले visual acuity करेंगे. Visual acuity करेंगे, ठीक है? Visual acuity, they find out that his left eye is affected. Visual acuity is बहुत काम है. चलो इसकी भी counting fingers कर लेते हैं. It's very less. You can see it's on the far end. अब क्या करेंगे? Fundus examination. Slit lamp examination and the fundus examination. तो पहले हम slit lamp देख लेते हैं. Slit lamp is relatively normal. Anterior segment is unremarkable. Our examination of the fundus, a fundoscopy, fundo for short. This is what you see. ये आप देख, नहीं, sorry, this is not what you see. This is what you see. Hemorrhage. Massive. कौन से hemorrhages हैं? Flame shaped hemorrhage. Hemorrhages. ठीक है. So एक सेकंड खत्म हो. Flame shaped hemorrhages. Dot blot BM. Dot plot hemorrhages भी हैं.
फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस किस लेयर में होते हैं और डॉट प्लॉट हेमरेजेस किस लेयर में होते हैं? नर्व फाइबर लेयर में फ्लेम शेप्ड, ठीक है, और डॉट प्लॉट इनर रेटिना। इनर रेटिना में, ठीक है, इनर रेटिना में इट्स द इनर न्यूक्लियर लेयर। तो इस पे एमसीक्यू आ जाता होता है कभी कि फ्लेम शेप हेमरेजेस कहाँ होते हैं और डॉट प्लॉट हेमरेजेस की साइट क्या है। यस, वी हैव हेमरेजेस, flame shaped hemorrhages and dot plot hemorrhages. Someone else said cotton wool spots. These are cotton wool spots. ठीक है, they're appearing as cotton wool. Picture थोड़ी sharp है, so do not confuse them with hard exudates. Hard exudates का color थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। These especially around the vessels, the Engorged cotton wool vessel. spots. Engorged vessels, engorged vessels and tortuous vessels. कितनी tortuous है, घुमा के जा रही है ये देखो, और फिर गायब हो जाती है। ये इतना घूम रही है, इतना तो नहीं घूमती है ना वैसे यूजुअली। व्हाट एल्स कैन यू पिक अप इन दिस पिक्चर? और क्या आपको नजर आ रहा है? Macular edema. मैक्युलर एडीमा, ठीक है। मैक्युलर एडीमा के लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे आगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सा मसला हो रहा है ना इसमें देखने में। और हम क्या, और इसमें क्या नजर आ रहा है? बस और कुछ नहीं है? आपको डिस्क के एजेस नजर आ रहे हैं? नहीं। इसमें डिस्क के एजेस नजर आ रहे हैं? इस Yes. वाली में? इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, तो यस देयर इज सम पैपेल एडीमा, ठीक है। डिस्क एडीमा भी प्रेजेंट है। okay. Yeah, this is these are your findings. So I will write the findings and you will tell me the findings. Fundus examination reveals Dot name, plot and flame shape. name, and I will write DB for dot plot. ठीक है, dot plot hemorrhages. कहाँ पे हैं hemorrhages? All over. All over the retina. So all over the retina. और थोड़ा सा quadrants. fancy होके बोलेंगे, we will sound scientific, in all quadrants of the retina. Okay? In all quadrants, in all 4 quadrants of the retina, there are flame-shaped and dot-plot hemorrhages. और हमें क्या मिला था? Cotton wool. Cotton wool spots. और हमें क्या मिला था? Tortuous engorged vessels. Tortuous. Tortuous की spelling अभी भी गलत लिखी है मैंने। Tortuous की spelling अभी भी गलत है। चलो छोड़ो। Tortuous, engorged, dilated, all those terms only for veins. और हमें क्या मिला था? ये कैसे फर्क पता चलता है फंडोस्कोपी पे कि ये वेन है या ये आर्टरी है? ये सवाल मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कोई पूछे। अब हमने कल हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी पे एवी चेंजेस इतनी ज्यादा डिस्कस किए हैं और किसी ने नहीं पूछा कि वेन कौन सी, आर्टरी कौन सी है। तो एवी क्रॉसिंग हमें कैसे पता लगता है वेन कौन सी, आर्टरी कौन सी है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सिंपल भी है साथ साथ। वेन्स आर यूजुअली डार्कर इन कलर। इसमें थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है क्योंकि हमें तो पता है ना वेन्स कौन सी है इनमें। वेन्स और एंगोल्स हमने बात कर ली थी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में दोबारा 2 मिनट पे जल्दी से ताकि कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो। अच्छा, the veins are darker in color, the arteries are lighter in color. This picture is not loading for some reason. Blur हुई हुई है, I don't know why. कल क्लियर थी। अच्छा, veins are बेहतर हो गई है काफी। अच्छा, veins are darker in color. तो if I am telling you कि इन 2 vessels में से कौन सी vein है, कौन सी artery है, is this a vein or an artery? कौन सी vein और artery इनमें से? लेफ्ट वाली वेन होगी और लेफ्ट वाली वेन है, राइट वाली आर्टरी। क्योंकि veins are darker in color, the arteries are lighter in color. Veins are generally somewhat larger in caliber. Arteries थोड़ी बहुत smaller होती हैं, फिर pulsation वाला का हम difference छोड़ देते हैं। और especially AB crossings में हम देखते हैं तो arteries they usually cross in front of the veins.
ठीक है। और अगर हम आर्टरीज को वापस ट्रेस करें तो एक वेन जो है वो एक या दो आर्टरीज के साथ पड़ी होगी, ठीक है। जिसमें ये एक वेन है ना, इट्स अराइजिंग विद टू आर्टरीज फ्रॉम दिस साइड। सिमिलरली अब इनमें कौन सी वेन है? ये वेन है, ये वेन है, ये वेन है, ये वेन है, डार्केस्ट वाली। ये वेन है ना, ठीक है। दिस इज द वेन। तो जनरली अगर आपको ऊपर से पता लगना, पूछना चाह रहे हैं कि वेन कौन सी, आर्टरीज कौन सी, तो वेन्स आर डार्कर इन कलर, समवट लार्जर इन कैलिबर, दे आर बिहाइंड द आर्टरीज क्रॉसिंग्स यूजुअली, और इधर पेयरिंग हो जाती है। आई थिंक वन वेन विद टू आर्टरीज होती है, और टू आर्टरीज और टू वेन विद वन आर्टरीज। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दिस इज मोर और लेस इट। जब हम कहते हैं कि कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी, जब हम इधर देखेंगे तब हमें यहाँ भी पता लग जाएगा। दिस इज द वेन, ठीक है। दिस इज द वेन, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द वेन, डार्कर वन, लाइटर वन इज द आर्टरी, ठीक है। ये हर जगह काम करता है। इसमें भी दिस इज द वेन, डार्कर वन, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द वेन, दिस इज द आर्टरी, ठीक है। ये तो आर्टरी ही है क्योंकि आर्टरी से निकल रही है, ट्रेस भी कर लेते हैं हम, ये आर्टरी है। दिस इज द वेन, डार्क जा रही है, और इसके साथ ही साथ साथ चल रही है, दिस इज द आर्टरी, द लाइटर वन। वेरी ब्रीफली, हम कहाँ थे? हम थे tortuous, engorged and dilated veins पे। So we have flame and dot plot hemorrhages all around the retina in all the four quadrants. We have cotton wool spots, we have tortuous, engorged, dilated veins in all And four papillary. quadrants. Four quadrants, good. And we have papilledema. What will you do next? FFA. FFA, OCD, FFA, and all that stuff, right? So these are different phases of an FFA. So confuse nahi hona, this is one phase, this one phase. Let's focus on this phase. हमें क्या नजर आ रहा है इस वाले में? सिर्फ इसमें Hyperfluorescent vessels. वेसल्स में हाइपरफ्लोरेसेंस है काफी ज्यादा, और उनके स्पेसिफिक एरियाज में इवन द मैक्युला इज नॉट स्पेयर्ड, some parts are spared, थोड़ा बहुत peripheral पे जाके नॉर्मल है, but around the large vessels you can see that there is this Hemorrhage. fogginess. hemorrhage भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। The important thing is you have to realize that this is somewhat normal and this is abnormal, क्योंकि यहाँ पे you're seeing this fogginess. Fogginess समझ आ रही है ना? You can appreciate the fogginess, can you? This is Yes. massive exudation है यहाँ पे, which is destroying the normal contour. So normal contour थोड़ा सा इस तरह का नजर आना चाहिए था ना हमें पीछे, हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा. There's papilledema, massive edema around the optic disc. ठीक है? So based on these symptoms and this FFA and this investigation and examination, what is your diagnosis? Central retinal vein occlusion. Vein occlusion. Vein Central occlusion. retinal vein occlusion. ठीक है, because हमने occlusion में देख ली कि the veins are affected, they are dilated and tortuous. All the four quadrants are affected, meaning that चारों quadrants है ना, जो हर quadrant को एक vein apply करती है, supply करती है, drain करती है, तो it's not that vein, it's all around. चारों की कह रही है, papilledema है, cotton wool spots हैं, macula भी spared नहीं है, dot plot and all that. This is central retinal vein occlusion. How will you manage this patient? कैसे मैनेज करेंगे आप इस पेशेंट को? Antiplatelet therapy. एंटीप्लेटलेट थेरेपी क्यों करेंगे? ताकि occlusion ना हो vein की. Occlusion now vein की, that is good.
एंटीप्लेटलेट थेरेपी यहाँ पे क्यों करेंगे, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी क्यों नहीं यूज करेंगे? अभी मैंने सीआरएओ की डिस्कशन में कहा था कि वी विल नॉट फोकस ऑन एंटीप्लेटलेट दैट मच, वी विल फोकस ऑन फिब्रिनोलाइसिस। तो यहाँ पे हम फिब्रिनोलाइसिस ताकि प्ले वो बने ही ना ना। वेन्स का कैलिबर और ज्यादा होता है, क्या ना, हीमोस्टेसिस का चांस। दोबारा रिपीट करें आप, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं कही थी कि वेन्स में स्टेसिस का चांस ज्यादा होता है, वीनस स्टेसिस का, वीनस स्टेसिस उसमें का तो थ्रोम्बाई बढ़ने के चांस। हाँ जी, बिल्कुल, thrombus is the word I'm looking for. Central venous retinal occlusion, central retinal venous occlusion, central venous retinal occlusion, whatever it is. The pathophysiology, the main thing behind is venous thrombosis. Okay? When we discuss CIO, we discuss that there is embolization, and that embolus, it occludes the vessel. And to treat that embolus, we need to dissolve that embolus. If it's a blood clot, we need to dissolve that clot. And for dissolution of a clot, we use fibrinolytic therapy. However, if there's a thrombus and we have to prevent enlargement of the thrombus, and there is acute rupture of the thrombus, if in both the cases, platelets, they play an important role. And when we give antiplatelet therapy, we make sure that if there's a thrombus and it has ruptured acutely, it does not enlarge. And if there is a thrombus, otherwise it is enlarging, it does not enlarge as such. So we use antiplatelet therapy, and alongside antiplatelet therapy, we can use another thing. What can we use? क्या यूज कर सकते हैं? Time is less and nobody wants to tell. All right, we can use anticoagulants for the same reason. Okay, so that thrombus does not evolve, it is resolved, and all these reasons. What else can we do? इसमें भी नियोवैस्कुलराइजेशन हो सकती है। Neovascularization हो सकती है, बिल्कुल. So another thing is that we try these things, and if the occlusion is complete, there is more or less nothing we can do. Medical therapies बिल्कुल हैं, काम कहती हैं, but it's a very severe case. It's a very bad disease with a bad prognosis, because if the blockage has become complete and it's become stable, then no treatment is as such available. क्योंकि हार्ट में जब ब्लॉकेज होती है तो we have therapies, we can use catheterization, we can perform a bypass graft, but those things are not viable options in the eye. So there are two important complications of this disease which I want to discuss. हम लेजर क्यों नहीं कर सकते हैं इस केस में? लेजर सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में लेजर क्यों नहीं कर सकते हैं? लेजर फॉर थ्रोम्बस, लेजर स्पेसिफिकली फॉर थ्रोम्बस ब्लॉकेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम CRO भी नहीं कर सकते. The same reason. What is that reason? लेजर में visible नहीं है ना. लेजर, you can only laser something that is visible through the cornea, through the fundus, through the slit lamp. क्योंकि स्लिट लैंप से ही लेजर थेरेपी होती है. The laser is attached to the slit lamp, और उसी तरह आप लेंस दे के स्लिट लैंप के अंदर से देख रहे होते हैं when you perform the laser. So in this case, and we know that in CRVO, the occlusion, the thrombus is at the lamina cribrosa. The lamina cribrosa is not visible to us. If the plaque were visible, if something that were causing, let's say, a branch retinal vein occlusion with the same symptoms, but confined to one branch, and if we saw an occlusion, which we cannot see still in this picture, if we saw something, if we saw a plaque, if we saw a thrombus or something occluding the vein, it was visible to us on fundoscopy, then laser destruction of the plaque or of that something would be an appropriate measure. However, since we cannot see it, it's not one of our therapies or treatments. Now, two complications. Two words. चलो two words हैं. इसमें important है जो मज़ेदार है. There are some buzzwords. ठीक है, आपको पता है buzzwords क्या होते हैं? Buzzwords वो अल्फाज होते हैं जो एक बार एग्जामिनर अपने मुंह से निकाल दे तो कहता है कि स्टूडेंट को इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. सारे सुन रहे हैं ना? चले तो नहीं गए अभी? 2 मिनट हैं. नहीं सुन रहे हैं. अच्छा, तो buzzwords are those words जिसपे एग्जामिनर बहुत खुश होता है if you know the answer, और अगर नहीं पता तो आप रील भी हो जाते हैं कभी-कभी. And sometimes they are helpful.
in diagnosing a scenario case, a minute, or even an MCQ. So this is one buzzword. This is another buzzword. एक और था मेरे ध्यान से one moment. क्या है ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ? Buzzwords. Buzzwords, yes. These are all buzzwords. Tomato splash appearance. मैंने हल्का सा दिन मजाक किया था ना, कैसे लगता है जैसे किसी ने टमाटर मारे हुए फंडस के ऊपर. Yep. This is an important buzzword. If it comes into an SEQ, if it comes into an MCQ, you will know that tomato splash appearance is this. Seeing in central retinal vein occlusion. Blood and thunder fundus. जैसे Thor की Thor 4 या Guardians of the Galaxy का title है यहाँ, Blood and Thunder. Blood and thunder fundus is used to describe the same thing. Blood and thunder. Thunder because of the cortical spots and all that. Blood because there are massive hemorrhages, short and flame-shaped hemorrhages all around the retina. So these are two words which are used, buzzwords to describe this fundus. Blood and thunder fundus and tomato splash appearance. What is 100 days glaucoma? Neovascular glaucoma. कौन सा glaucoma? Neovascular It glaucoma. is another term which some people love for neovascular glaucoma. Why is it called the 100 days glaucoma? We will discuss it the next time. Okay, so this ends our session on CRVO and CRVO. If any of you have any questions, अगली बार अभी time नहीं है, ग्रुप पे पूछ लेना, अगली बार कर लेंगे discuss. Next time we will discuss retinal detachment. Okay. So this is all. Take care, guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.